21ME041, leading the team including members 21ME051, 21ME052, 21ME019, and 21ME068. We are going to present you about introduction of ArcGIS and QGIS and some of the functions, applications, and disadvantages and advantages too. First of all, I am going to introduce you about QGIS, that is quantum GIS. The QGIS is uh, the QGIS is free open source geographic information system in C language that support most geospatial vector and raster file types, etc. बेसिकली QGIS एक ऐसा ओपन सोर्स जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि जियोस्पेशियल डेटा को देखने में और उसे एनालाइज करने में मददरूप साबित होता है. And it also provides additional tools such as GPS data support, geo-referencing and additional mapping components, जो कि हमें उसके एप्लीकेशन के अंदर ये जीपीएस डेटा सब मतलब कि जीपीएस को डेटा विजुअलाइज सब कर सकते हैं. बाद में जियो रेफरेंसिंग मतलब जो जियो स्पेशियल डेटा है उसको रेफरेंस करके पूरा शो कर सकते हैं, वैसे सब है. और भी कई सारे मैपिंग कंपोनेंट्स हैं. मूविंग फर्दर, द एप्लीकेशन इज फ्री टू यूज एंड अलाउज यूजर टू viewing data and creating, editing data and also rasters data in many formats. मतलब देखा जाए तो ये एप्लीकेशन है वो फ्री में ही यूज करने के मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है. और उसमें कई सारे फॉर्मेट्स में और वेक्टर ओवरलेइंग में भी यूज होता है. और यूजर्स जैसे यहाँ पे लिखा है QGIS is compatible with many OS including Windows, Linux, Mac, Unix and Android. मतलब ये जो QGIS है वो कई सारे प्लेटफॉर्म पर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे अवेलेबल है और उस पर रन हो सकता है, इंक्लूडिंग विंडोज, लिनक्स और यूनिक्स एंड एंड्रॉइड. और ये वेब एप्लीकेशंस पे भी कई सारे काम लगता है. और उसमें उसकी सर्वर एप्लीकेशंस बहुत यूजर बेस पे है, मतलब कई सारी उसकी सर्वर एप्लीकेशंस भी अवेलेबल है, जो कि आगे हम बात करेंगे. Now moving forward to functions of QGIS that are majorly viewing data, analyze data, create and export data, and explore data and compose the maps in applications. First of all, talking about viewing data, you can view combinations of vector and raster data in different formats and projections without conversion to internal or common format. मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो आप उसका एक फंक्शन है व्यू डेटा व्यूइंग का, तो उससे आप कई सारे फॉर्मेट्स को आप देख सकते हो. जैसे स्पेशली इनेबल्ड टेबल्स को आप फॉर्मेट्स सपोर्ट करता है, बाद में इमेजरी फॉर्मेट्स और रास्टर फाइल्स को करता है सपोर्ट, बाद में मैश डेटा कर सकते हो. और वेक्टर टाइल्स भी उसमें कई सारी आपको देखने को मिल जाती है, मतलब उसके फंक्शंस में आप ये भी इंक्लूड है जो आप देख सकते हो. बाद में नाउ टॉकिंग अबाउट एनालाइजिंग डेटा, दैट इज द सेकंड foremost function, and here you can perform spatial data analysis on spatial databases and other OGR supported formats. Means here QGIS currently offers vector analysis, raster analysis, and sampling, geoprocessing, geometry, and database management tools. Means such a big amount of such a big number of functions are providing by QGIS. That is a huge benefit, you can say. And you can also use the integrated graph tools. Talking about the graph tools, these are the tools for layering, means giving the map layers in QGIS for a better understanding and visualizing of data in application. And it also work with many processing plugins that are externally
added to the application, and it can be vastly help us to analyze and visualize data. Now talking about create and editing, managing, export vector and raster layers इन सेवरल फॉर्मेट्स। मतलब यहाँ पे अगर हमें देखा जाए तो QGIS मेनली रास्टर डेटा, मतलब रास्टर लेयर्स और वेक्टर डेटा पे मेनली फोकस करता है, जो कि हमें एक बहुत अच्छे से जो वेक्टर डेटा जो पूरा सब फॉर्मेट्स से पूरा मैप देखा जाए तो एकदम अच्छे से प्रेजेंट करेगा। और उससे क्या है कि पूरा QGIS एप्लीकेशंस में मैप में हम अच्छे से शो कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। और मेन तो इसका जो फंक्शन है कि विजुअलाइज करना, वो तो यहाँ पे हो ही रहा है। और QGIS offers many things such as vector digitizing tools, ability to create and edit multiple file formats and grass vector layers, जो कि हमने पहले ही बात कर ली थी कि ग्रास वेक्टर लेयर्स उससे सपोर्ट करता है, मतलब फॉर्मेट में हम कर सकते हैं। और सपोर्ट फॉर विजुअलाइजिंग एंड एडिटिंग ओपन स्ट्रीट मैप डेटा। और आगे टॉकिंग अबाउट लास्ट बट नॉट लीस्ट फंक्शन ऑफ एक्सप्लोर डेटा एंड कंपोज मैप्स, you can compose maps and interactively explore spatial data with friendly GUI। और हम ये एक वर्ड है फ्रेंडली GUI, जो कि बहुत मेन उसका बेनिफिट है, जो कि फ्रेंडली GUI जो उसका मेन फंक्शन है कि कोई भी यूजर आएगा तो उससे इजीली समझ में आ जाएगा कि उसमें कौन सी जगह पे क्या है, स्पेशल डेटा एग्जैक्टली हम उसमें देख सकते हैं कि फ्रेंडली ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस है वैसे। और उसमें मेनली उसमें रोल रहता है ये सारे GUI फंक्शंस का, जो कि उसमें QGIS का अलग से ब्राउजर मिलता है। बाद में ऑन द रिप्रोजेक्शंस, ऑन फ्लाई रिप्रोजेक्शंस होते हैं, DB मैनेजर, प्रिंट लेआउट, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, उसमें ओवरव्यू पैनल होता है, और स्पेशल बुकमार्क्स और कई सारे फंक्शंस है। नाउ handing over to ID number 21ME051। Good evening, good morning everyone. I am Kruti Lad with ID number 21ME051. I am going to explain some of the applications of QGIS. So first of all, we'll understand what is spatial database. It is basically a database where it stores geographic information about the earth and its features. So what QGIS does is it stores its data in the form of spatial database and allows us to embed various processing capabilities and GIS features. While doing so, we can delegate a lot of domain-specific data by behavioral coding, that is which codes some and makes understand the behavior of environment and all that. And further, we can maintain and future evolutions also are made easier from this QGIS function, and the development cost is also reduced. Beyond a desktop server and beyond a desktop and server GIS, QGIS can also be a real development platform. Can we switch to the next slide? Yeah. Now let us see a few examples of applications which are already built within the QGIS platform. So first is wastewater and water network management. So here we can develop waste water network through QGIS and interpret what the lines and those pipelines and all goes. We can easily understand where to locate those and all. Similarly, with electricity network management, natural gas network management, and cadastral management, there are many such examples, but we have included here few only. Can we switch to next slide? We come
spatial information from various sources. These data sources include vector and raster data files on a disk and a variety of spatial database and even web. So basically what it is, from wherever the data comes, GIS and is displayed as map layers. The map layers can be shown or made hidden, but we can also customize them in different ways and display it on a map. The map layers are then combined and displayed on a map. Can we switch to the next line? Next slide. Finally, the various the map and the others it is working with. Here we can only in QGIS software we can only work on one project. We cannot do 2 to 3 projects simultaneously. And here is a picture shown which gives information about different layers and how it combines and give a full map. Now, next slide. Okay. Now QGIS is linked with Python. So we know that QGIS is itself written in C++, but it is also uh, supporting Python programming. A Python interpreter is built in and interactive console or run plugins written in Python. There are also some API for querying and controlling the QGIS. So API is an application programming interface. Now let us next slide. Can we switch to the next slide? It is already switched. I have Next, switched. yeah. Now let us take three. There are few ways in which we can work with Python and QGIS system. So first one is through Python console. So you can open this console and run the interactive and allow us to type different types of commands and results immediately. Next is Python plugin. These are Python packages designed to run within the QGIS environment. So these plugins are a kind of different software kind of thing which can directly be run through QGIS. And further moving on to external application, you can also use these QGIS Python API in your own applications, and we can also make different applications on our own and interact with this QGIS application. Thank you. Now I hand over the further discussion to Palak Patel. Hello everyone, my name is Palak Patel, ID number 21 ME019. I would like to share the information about advantages and disadvantages of QGIS. First of all, we will discuss about how can we take advantages using QGIS software. So this application will help you to view and overlay two types of data, which is vector and raster data. QGIS is one of the application of its sort that is completely free to use. It is also called user-friendly GUI. Although you can find many applications with the same capabilities out there, QGIS is the best of all because it is easy to use. Next slide. The question is why many people are turning to QGIS because it allows people to analyze data on all databases and OGR formats. It offers incredible digital platforms. It, it will help you to view, edit, and analyze geospatial data. QGIS is also offers incredible digital solution for grass vector layers. Next. QGIS gives us lots of advantages,
but there are its disadvantages too. Most of people think that this application is confusing to beginners because it is less beginners friendly. Many people wouldn't recommend it to people who mainly want to create maps. The map making features are very cumbersome. This is why many people, especially those that want to create map, don't choose QGIS. Next. The platform takes lot of from ArcGIS. If closely checked, you will realize that QGIS takes a lot of computing power from ArcGIS. Tools can be outdated most of the time. It lacks a proper online tutorial. The fact that there are no proper tutorials and online help makes this application hard to use. So further, moving on, I would like to share the basic introduction of ArcGIS software. Esri's ArcGIS is a GIS software which allows users to manage and analyze graphical information by visualizing a range of geographical statistics through layer building maps. The main theme of this software is visualizing and analysis of data. It is used by a whole host of academic institutions and departments to develop and illustrate groundbreaking research. Further, it is used by many governments and commercial or private institutions worldwide. Next. The system has the capability to make geographical information accessible throughout an institution, company, privately or openly on the internet. As such, the software essentially works as the platform through which geographical data can be connected, shared, and analyzed. Here, this is a picture of geographical information using ArcGIS. I would like to handing the information to Kantarya Divya. Hello everyone, my name is Comparision Divya, ID number 21ME052. I explain to ArcGIS function. Base map layer. A base map layer is a layer that provided the overall visual contents for a map of scene. It typically contains geographical features such as contains lakes, administrations, boundaries, streets, cities, and a place name. These features are represented with a different style provided by the basemap layer service such as the streets, topographical, and image. The style you choose depend on the types of application and the visualization you would like to create. Next. Data driven visualization. Field value. Field value can determine the visualization properties of the symbol. Visualization created with a field value can be persisted in the web map scenes and exported to Johnson. ArcGIS expression. An expression evaluation to a number or text value. This expression may be persisted and shared to item on ArcGIS Online or ArcGIS Enterprise portal. Visualization created with ArcGIS expression can be persisted web map skins and exported to John. Skip this slide. Next, data management. But this ArcGIS one also, you can skip this one also. Okay, skip this one also. Yes, start from this. Application of ArcGIS. First, enable WebGIS in your infrastructure. First, one primes or in your own cloud. Second, ready to use the application and the GIS service. First, spatial data management. Second, visualization. And third, analysis. Share your GIS work and resource. Spatial enable your organization. First, promote my maps everywhere. Next. ArcGIS in integrated system, web maps layer, enterprise data, office data, GIS maps and data, identity and contents. Next, the ArcGIS system. This picture is the ArcGIS system view.
web, mobile, desktop, cloud, enterprise, online. The web is web app builder, web app temples, JavaScript API. Next. Obtaining cross section. A section along Okay, skip this line. most Okay. user like the power it offers to for spatial analysis and the data. Second, the platform for has a compelling tools that can help you in all dimensions. This software has an excellent reputation and expression is GIS software. This is the reason why these are excellent and competitive computer geographic analysis due to impeccable reporting. This is beta in the GIS software market. Next, explain in Sonagra Tirth. Hello, unmute yourself. Yes, sir. Yes. Hello, everyone. Good afternoon. I am Sonograthi, ID number 21ME068. I going to some advantage and disadvantage of ArcGIS. Firstly, we can discuss about the advantage of ArcGIS. The software has couple of advantage statistics tool that much help in the whole process. के सॉफ्टवेयर में कपल ऑफ एडवांटेज और स्टैटिस्टिक आंकड़ाकीय टूल्स है जो पूरी प्रोसेस में हमारे लिए हेल्पफुल है. सेकंड, ये सॉफ्टवेयर इफेक्टिवली हैंडल large of raster data and vector. Has application for publishing web maps for the public. Has applications for the publishing web maps for the public. ये पब्लिक के लिए वेब मैप्स एंड इट्स web maps and publishing the application all of the data and web materials. Let's we discuss about the disadvantage of ArcGIS. The first price the first con to spot it price standard inclined are much considered. It is a not open source. It is not open source. This is a reason why it is not परफेक्ट ड्यूरिंग एकेडमिक्स के दौरान इसका ज्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि ये सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है. ArcGIS ऑनलाइन सर्च फ्रॉम pro limit. The software is regulated to a less flexible less than traditional ArcGIS server. इसका जो ट्रेडिशनल ArcGIS सर्वर है उससे कम फ्लेक्सिबल है, इसलिए भी इसको थोड़ा कम पसंद किया जाता है. प्लीज द स्लाइड. कर दी यहीं से कर दी. इस ऐप में प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए सब्सक्रिप्शन के बिना इसमें कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है. इसीलिए इसका ये सबसे बड़ा ये डिसएडवांटेज हम इसको कह सकते हैं. इसी प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एज द ओनली सॉल्यूशन टू. Next slide. Okay, complete in 3 minutes. Okay, sir. Let's we discuss about the comparison Q-GIS and ArcGIS. Please switch the slide. Firstly,
Firstly, here we can see the one side QGIS and other side ArcGIS. The difference. First, we will discuss a license. QGIS का लाइसेंस है वो सबके लिए फ्री में अवेलेबल है, तो ऑन अदर हैंड ArcGIS वो पेड लाइसेंस प्रोवाइड करता है। इसका ऑपरेटिंग जो QGIS का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स और एंड्रॉइड में प्रोवाइड होता है, और ArcGIS का है वो विंडो और लिनक्स में ही होता है। वेरिएशन मल्टीपल वेरिएशन एट द सेम सिस्टम। इस सिस्टम में मल्टीपल वेरिएशन है, और अदर हैंड ArcGIS में वन वेरिएशन इंस्टॉल, इसमें वन ही वेरिएशन इंस्टॉल हो सकता है। टूल्स की बात किए करते हैं तो इसमें सम टूल्स फ्री है, और दूसरी साइड ArcGIS में जो टूल्स है वो पेड टूल्स है। हम अब आगे सोर्स की बात करें तो ये ओपन सोर्स है, और दूसरी साइड ArcGIS है वो क्लोज सोर्स है। हम फाइल फॉर्मेट एंड एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो इसमें ऑल फॉर्मेट की फाइल है वो सपोर्ट करती है, और इसमें लिमिटेड ही सपोर्ट करती है। रिलायबिलिटी की बात करें तो इसमें ये QGIS है, क्वांटम GIS वो मोर रिएबल है, और उसके कंपैरिजन में ArcGIS है वो लेस रिलेबल है। और अब आगे मैपिंग फंक्शन की बात करते हैं तो QGIS है उसमें कोई एडवांस फंक्शन नहीं है, और ये ArcGIS है उसमें मेनी ऑफ एडवांस फंक्शन है। प्लीज स्विच द नेक्स्ट। अब इसकी प्रोसेस की बात की जाए तो QGIS है उसमें प्रोसेसिंग टाइम कम लगता है, और ArcGIS में प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है।